Hello and welcome to Headlines Now. I'm Paloma Rao. Let's take a look at the national headlines. After a mass exodus of Northeast Indians from the south, thousands reached Guwahati by a special train. Former Haryana Home Minister Gopal Kanda has been sent in a 7-day police custody for the suicide of an air hostess. The government seems to be on the back foot after the CAG report indicating losses to the exchequer. UPA slams the auditor. And it's the end of a very special career as VVS Lakshman hangs his boots after 16 years in international cricket. Mahesh Bhupathi and Rohan Bopanna will not be part of the Davis Cup after the Indian Tennis Association drops them for the Olympics fiasco. 16 people have been arrested from different parts of Bangalore for alleged assaults on people from the northeast. 3 of them are being questioned for alleged rumour mongering. Meanwhile, the situation in Lower Assam today remained peaceful with no report of any violence, even as 2 special trains arrived here carrying 1,700 people who had fled the southern states after rumours of impending attacks. A large number of students and professionals from Assam and other northeastern states have fled Karnataka and Andhra Pradesh after rumours that they will be attacked in the wake of the violence in Lower Assam. असम बंगाल का आदमी अगर हम लोग को यहाँ में कोई सुविधा दे तो हम लोग यहीं में रह जाएंगे। असम जाएगा नहीं, असम में तो और गंडगोल हो रहा है। फिर हम लोग असम में जाएंगे, फिर बासिंदा कर लेंगे, फिर गंडगोल हो जाएगा, सब ये कर देगा हम लोग। इसलिए हम लोग असम नहीं जाएंगे। हम लोग असम में घर और हम लोग को सब खत्म कर दिया है, बड़े लोग सब जला दिया है, सब खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग भाग के आया है बंगाल। अब बंगाल में हम लोग रिलीफ में खाना वाना बनाता है, खाता है। बंगाल का सरकार हम लोग को देखता है, खाना वाना सब कुछ देता है, ठीक है। The CBI today announced a cash reward of up to ₹1 lakh to anyone who could provide credible information which could lead to the identification or arrest of perpetrators of the Assam violence. A special crime unit is camping in Assam to probe 7 cases of violence registered from 3 districts in connection with ethnic riots. People can give information on a special helpline and telephone numbers along with their identity would be kept secret. Meanwhile, the CBI team has recovered some video clippings which are believed to be of an ethnic attack on a hostel in Kokrajhar. The clashes between Bodos and immigrants have left at least 77 people dead and more than 4 lakh homeless. JDU Chief Sharad Yadav seeks a temporary ban on social media in wake of rumours of revenge attacks forcing thousands of fear-stricken people hailing from northeastern states to flee from various cities. इसको सरकार हैंडल कर सकती है, लेकिन हमारे पास तंत्र बड़ा वीक है। मैं कहाँ कह रहा हूँ इसको परमानेंट करो, देश को नॉर्मल हो जाने दो, फिर कौन आजादी को छीन रहा है? ये विजुअल मीडिया को कौन कह रहा है इसको? इसने अच्छा काम किया। Gripped by rumor-fueled fears of impending attacks on them, people from the northeast continue to flee the city for the 3rd consecutive day today, with hundreds thronging the railway station and heading back home. The central railway station here has been seeing a flow of anxious northeasterners desperate to get tickets for their onward journey in spite of assurances of safety and no untoward incidents targeting them being reported. The Chennai City Police have set up a round-the-clock control room and helplines exclusively for northeasterners. In a bid to reach out to them, the Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha has given her assurance that the state is peaceful and that her government will take steps to ensure their safety. Minister of State at the Prime Minister's office, V. Narayanasamy, assures that protection is being provided to the natives of the northeast by the state governments, and the rumours spread by some miscreants are totally false and fabricated. And there is no panic required. If you want to go, you can go and come back. Protection is being given by the state governments. The rumours are being spread by some miscreants, undesirable elements, antisocial elements, that there is no protection to the people of northeastern region in southern part of India. It is totally, it is unwarranted. It is totally false and fabricated, and to create panic among the people. And therefore, the Honourable Prime Minister yesterday in the Parliament and also the Home Minister made an appeal to the people that they have got every right to reside in any part of this country, and they will be given protection by the state government.
The correspondent of the Padma Sheshadri Bala Bhavan School in the city was arrested and released on bail last night in connection with the drowning of a 4th standard student Ranjan in the school's swimming pool on Thursday. Police said Ms. Sheila Rajendran, who is also the deputy dean, was arrested and taken to the KK Nagar police station and produced before a magistrate who released her on bail. Cases were registered against her under causing death by negligence. The police have already arrested 5 people in connection with the incident and they were also released on bail. Former Home Minister of Haryana, Gopal Goyal Kanda, who has been on the run for the past 11 days, surrendered before the Delhi police earlier in the day. Kanda, the former Haryana minister who is the prime accused in the suicide of former air hostess Geetika Sharma, has been sent to 7 days in police custody by a court in Delhi. Earlier today, the former minister was taken to hospital for a medical examination. The minister has been accused of murdering his employee Geetika. She used to work as an air hostess in his defunct MDLR Airlines. The Delhi High Court on Friday had turned down the plea for anticipatory bail filed by Kanda. The charge of abetting suicide carries a maximum sentence of 10 years in prison. जज साहब ने फैसला किया कि इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए और 7 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया जाए। साथ में हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये भी कहा कि लॉयर्स जो है दिन में एक बारी उससे मिल सकेंगे और 1 घंटे या आधे घंटे के लिए वहाँ रह सकेंगे और साथ में उसका 24 घंटे में एक बार मेडिकल होगा और उसको 7 दिन के बाद कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन लाइव कैमरा रिकॉर्डेड हो, ताकि जिस तरह से इसने 2 बारी स्टेटमेंट मीडिया में बदली है वो अब दोबारा ना बदले। इसका लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हो और एक रिटायर्ड जज सामने बैठे इसके सामने, ताकि देयर इज नो रूम फॉर चीटिंग नाउ, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत चीट कर चुका है, बहुत एविडेंस मिटा चुका है। कल गीतिका का फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया गया है, इसकी मैंने खबर डीसीपी को दे दी है। वो किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता। Minutes after the CAG report on the coal scam was tabled in Parliament, it shook the corridors of power, triggering a political storm. The Union Coal Minister Shri Prakash Jaiswal even questioned CAG's loss estimate of rupees 1.86 lakh crore due to non-auction of coal blocks to private companies. With the government's top auditor questioning the delay by the UPA in introducing the auction route, the opposition is lapping up the opportunity to tear into the government, pushing the Congress on the defensive. The centre-state fight is escalating, with the Congress attempting to share the blame with BJP-ruled state governments, with the BJP stonewalling all such attempts. जिस प्रकार से देश का संसद एक संवैधानिक संस्था है, उसी प्रकार से सीएजी भी एक संवैधानिक संस्था है। चोरी पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि सीएजी को 000 लगाने की आदत है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब चोरी पकड़ी गई है तो कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के प्रवक्ता उसे बचना चाहते हैं और एक प्रकार से देश के एक संवैधानिक संस्था का अवमानना कर रहे हैं। ये बड़ा अशोभनीय है। हमारा ये मानना रहा है और हम निरंतर ये कहते रहे हैं कि सीएजी को जो ये 0 लगाने की आदत पड़ गई है, कई 76,000 करोड़, कई 86,000 करोड़, इस आदत से सीएजी को बचना चाहिए। और अगर उनके आंकड़ों में इतना ही दम होता, जब 2G के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट उनके 1,76,000 करोड़ के फिगर के ऊपर मोहर लगा देती। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2G में जो प्रिजम्पटिव लॉस निकाला था सीएजी ने, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो सीएजी को कुछ सीख लेनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट लिखते समय कुछ संगीन और गंभीर रहने की जरूरत है। ये केंद्र सरकार द्वारा खुद का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सीएजी पर भी हमले किए जा रहे हैं। जो सीएनएजी पर जिस तरह से नारायण स्वामी और श्री प्रकाश जायसवाल ने जिस तरह से आपत्ति उठाई कि ये उनका मैंडेट ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बनता है, विशेषाधिकार हनन का बनता है और उसके बारे में जो भी उचित होगा हम करेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि अपने
पर हो रहे और प्रधानमंत्री सीधे घेरे में है, इसलिए डिफ्लेक्ट करके दूसरों पर दोष ठीकरा फोड़ने की कवायद में असफल तरीके से लेकिन कांग्रेस वाले जुट गए हैं। More news on the national and international front, but first a short break. Stay tuned.